Now we are live. Hello, everybody, and welcome back to today's class of statistics. So, welcome everyone, and very good afternoon. And let's see who all are live now. Avni is there, Sakshi, Nishi Garg, Nityashri, Preeti, Ariharan, Anushka, Anuj, Renuka, Nancy, Tambishwari, Kinjal, Hitesh, then Priyanka, Anuj, Shreya, great. So welcome everybody. And today is one of the most different chapter, technical chapter, and also the important chapter. So I think आज काफी ज्यादा लोगों ने join किया है. That's great because one of the fearful chapter जिसको आप कह सकते हैं, but you have to become fearless after understanding of the two sessions. चलिए, तो दोनों सेशन कंप्लीट होने के बाद में आपके माइंड से जो प्रोबेबिलिटी का डर है वो निकल जाना चाहिए. तो फटाफट से शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की. टू सेशंस है हमारे पास फॉर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर. तो चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं प्रोबेबिलिटी की. तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? वैसे आप लोगों ने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, क्लास 9, 10, and then of course in class 11 and 12 if you have opted for mathematics. Otherwise आप लोगों ने 9, 10 में जस्ट उसका बेसिक्स कवर अप किया होगा. सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ओनली. So what is the meaning of the term probability? Probability means chance of happening an event. किसी इवेंट के अकर होने के चांसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी. जैसे आज बारिश होने के चांसेस कितने हैं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इंडिया विल विन द मैच? तो इस तरह के बहुत सारे इंस्टेंसेस डेली होते हैं हमारी लाइफ में, और उसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है. राइट. सो प्रोबेबिलिटी के अंदर प्रोबेबिलिटी के अंदर सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इनिशियली प्रोबेबिलिटी वाज द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. तो पहले ये मैथ्स का एक पार्ट था. इट वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. बट धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़े, डेवलपमेंट हुआ, चीजें इंक्रीज होना शुरू हो गई, तो इसको मैथ से हटा करके किस में इंक्लूड कर दिया गया? स्टैटिस्टिक्स. सो नाउ प्रोबेबिलिटी इज द पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो ओरिजिनली यूरोप के अंदर काफी सालों पहले, 300-400 साल पहले, इसका यूज होता था फॉर गैम्बलिंग पर्पस. कि अगर वो लोग कोई गैम्बल कर रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, तो उसमें उनके विनिंग के चांसेस या लूजिंग के चांसेस कितने हैं. तो इनिशियली प्रोबेबिलिटी का यूज गैम्बलिंग के लिए हुआ था. और उसके बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने इसको अपनी रूटीन लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में इंक्लूड करना शुरू कर दिया. राइट. सो प्रोबेबिलिटी को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स. वन इज सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी एंड अदर वन इज ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी. So these are the two parts. One is subjective and other is objective probability. Now, subjective का मतलब क्या है? What is the meaning of the term subjective? So subjective is basically dependent on the personal judgment. ऐसी कोई probability जो कि किसी पर्सन पे डिपेंड कर रही है. तो इट इज डिपेंडेंट ऑन एनी पर्सन. अब उस पर्सन पे डिपेंड कैसे है? एवरी पर्सन और एवरीबडी इज हैविंग डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट हैबिट्स. तो इसलिए हर पर्सन की चॉइसेस अलग होती है. सो सब्जेक्टिव इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन, whereas objective is dependent on chance. लाइक कुछ भी हो सकता है. इफ यू आर टॉसिंग अ कॉइन, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा. इफ यू आर थ्रोइंग अ डाइस, यू कैन गेट एनी नंबर बिट फ्रॉम 1 to 6. सो ऑल दीज थिंग्स आर द पॉइंट ऑफ चांस. इन सब में चांस की बात आती है. लेकिन सब्जेक्टिव के अंदर it is dependent on the personal judgment, past experiences, knowledge of that person. So therefore, subjective के अंदर सब्जेक्टिव के अंदर आप कह सकते हैं नथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द चांस. देयर इज ह्यूमन बायसनेस इन्वॉल्व. यहाँ पे ह्यूमन बायसनेस होती है और हर किसी का आंसर अलग हो सकता है. आंसर वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. लाइक इफ somebody has asked कि इंडिया वर्सेस अभी जो भी मैचेस चल रहे हैं, तो लेट्स से इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड. सो कुछ लोग कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मैच बाय इंडिया इज 0.9.
किसी का आंसर होगा 0.74, किसी का आंसर होगा 0.36। सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर पर्सन के लिए प्रोबेबिलिटी अलग है, डिफरेंट है। लेकिन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? वी आर यूजिंग अ साइंटिफिक फॉर्मूला, यहाँ पे हम एक साइंटिफिक फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड यूजिंग दैट फॉर्मूला वी विल गेट ऑलवेज द सेम आंसर। ओके, तो सब्जेक्टिव को आपको पढ़ना नहीं पड़ता है, ये हम बाय डिफॉल्ट अप्लाई कर देते हैं। बट ऑब्जेक्टिव को हमें पढ़ना पड़ता है। वी हैव टू अप्लाई सम सेट ऑफ रूल्स, सम फॉर्मूलाज, सम थ्योरम्स। तो देयरफॉर हमारे जो सिलेबस में होता है दैट इज द ऑब्जेक्टिव पार्ट, एंड सब्जेक्टिव तो हम प्रैक्टिकल लाइफ में दिन में हजारों बार अप्लाई कर देते हैं। ओके, परफेक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द टर्म्स फर्स्ट। तो कुछ टर्म्स के साथ हम पहले फेमिलियर हो जाते हैं। द फर्स्ट टर्म इज नोन एज एक्सपेरिमेंट, or you can also say the trial. So experiment means what? Experiments means any performance that produces certain result. हमने कुछ परफॉर्म किया और वो परफॉर्मेंस से कोई रिजल्ट आ रहा है, दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। दैट इज नोन एज एक्सपेरिमेंट। So what we are performing, like tossing a coin, tossing a coin. Similarly, throwing a dice, throwing a dice. Okay. So all these are known as the experiments. ये सब क्या है? Experiment, because they are yielding some result. तो कुछ भी आप experiment करते हैं और उससे कुछ भी आप perform करते हैं और उससे result आता है, that is known as experiment. Now, एक term अगर इसके साथ में जोड़ दिया जाए, if we add one term, that is random. So what is the random experiment? So any experiment whose result is dependent on the chance, कि कुछ भी आ सकता है, like head भी आ सकता है और tail भी आ सकता है। We cannot be 100% sure कि अगर हम coin को toss करेंगे तो इस बार head ही आएगा, तो we cannot be 100% sure. So it is dependent on the chance. तो जब भी आपका रिजल्ट चांस पे डिपेंड करता है, then it is known as a random experiment. Okay. Then next term is events. Events का मतलब क्या है? द रिजल्ट और आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है उसके रिजल्ट या आउटकम को हम क्या बोलते हैं? इवेंट। सो इवेंट कैन बी डिवाइडेड एज सिंपल इवेंट्स और composite events. Simple is also known as elementary and composite is also known as compound event. Now दोनों में फर्क क्या है? सिंपल इवेंट का मतलब है कि कोई ऐसा इवेंट अगर हम उसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, इट इज सिंपल। बट अगर कोई ऐसा इवेंट है विच कैन बी ब्रेक, कंपाउंड इवेंट। ओके, सो अगेन द सेम एग्जांपल, टॉसिंग अ कॉइन एंड गेटिंग हेड एंड टेल इज अ सिंपल इवेंट, उसको आप फर्दर स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। ओके, but if we take other example, getting even number on the dice पे even number आना चाहिए। now even number can further be splitted as 2, 4 और 6। even number को हम कैसे split कर सकते हैं? 2, 4 and 6। so this is basically composite or compound event, composite or compound event। then, so what is the basic formula to calculate the probability? So the probability is equal to number of favorable outcomes, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. So favorable upon total. So this is the formula for calculation of probability. Now, if we are tossing a coin, so the possible events are head and tail. Okay. Now, what is the probability of getting head? Head आने की probability क्या है? So apply the formula. So out of these two outcomes,
1 is favorable. Head आना, that is a favorable outcome, divided by total number of outcomes, that is 2. So 1 upon 2, or you can say 0.5, is the probability of getting head. Similarly, probability of getting tail, 1 upon 2, that is again 0.5. If we talk about dice, so dice contains numbers from 1 to 6. So probability of getting number 1 on the dice. So one outcome is favorable out of 6. Probability of getting number 2 on the dice. So it is again 1 upon 6. 1 upon 6. Probability of getting odd number on the dice. So odd number कौन कौन से हैं? 1, 3 and 5. So 3 is the favorable number of outcomes, divided by total number is 6. So 1 by 2. Okay. Then similarly, probability of getting number greater than 4. Now number greater than 4 can be 5 or it can be 6. So 2 by 6, or you can say 1 by 3. 1 by 3. Priyanka is asking to solve on calculator. See, all these are simple calculation. Why you want to use calculator on these things, right? Calculator पे आपको इन छोटी छोटी calculations के लिए time waste नहीं करना है. Just apply the simple mind calculation. जो चीज आप mind में कर सकते हैं उसके लिए calculator पे time waste नहीं करना है. All right? So 2 by 6 is simply 1 by 3. Don't waste time on your calculator. Okay? All right. Now, the most important term of probability is mutually exclusive events. Mutually exclusive events. So, mutually exclusive का मतलब क्या है? Those events which cannot occur together. Those events which cannot occur together are known as mutually exclusive events. तो ऐसे इवेंट जो साथ में नहीं हो सकते. For example, getting head and tail on the dice. So if head is coming, then tail will not come. If tail is coming, then head will not come. तो दोनों में से कोई एक ही इवेंट होगा. Only one will occur at a time. Okay. Similarly, if you are tossing a dice, either you will get number 1 or number 2 or number 3. Not all you will get at one instance. सब कुछ एक साथ में नहीं आ जाएगा. अगर 1 आएगा तो बाकी नंबर्स नहीं आ पाएंगे. इन केस 2 आ गया तो फिर बाकी नंबर्स नहीं आ पाएंगे. ऑलराइट. Then these are mutually exclusive events. Then next is equiprobable or equally likely events. Equally likely events or equiprobable events. तो उसका मतलब क्या है? ऐसे इवेंट्स जिनके अकर होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, दे आर नोन एज इक्वली लाइकली इवेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, एंड दोनों का रिजल्ट क्या है? 1/2. Similarly, probability of getting number 1 on the dice and probability of getting number 2 on the dice, both are equal, that is 1/6. So all these are equally likely events or equiprobable events. Okay, understood? Okay.
Now different definitions were there at different times. So let's fast go through them because these are not much relevant. So the basic definition was, the first definition was number of equally likely and favorable events divided by total number of equally likely इवेंट्स। तो पहले की जो डेफिनेशन थी वो स्टिक थी किसके ऊपर, इक्वली लाइकली इवेंट्स के ऊपर। सिर्फ वही चीजें आती थी जिसके चांसेस इक्वल है। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़े, प्रोबेबिलिटी की स्टडीज इंक्रीज हुई, तो फॉर्मूला एक्सपैंडेड, तो फॉर्मूला एक्सपैंड हुआ एंड वी इंक्लूडेड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। हमने इन सबको इंक्लूड करना शुरू कर दिया। सो ऑल दीज फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो धीरे धीरे डेफिनेशन जो है वो इंक्रीज होती चली गई। नाउ वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई करता है, तो वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी लाइज फ्रॉम 0 to 1। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से लेके 1 तक कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी 0, इट कैन बी 1 और एनी नंबर बिटवीन दीज, एनी नंबर। 0 से लेके 1 तक कोई भी नंबर हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ओनली पॉजिटिव एंड फ्रॉम 0 to 1। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। टू पॉइंट्स। So let's say we toss first coin, and if we are tossing first coin, first time हमने coin को toss किया, तो क्या आएगा, head या फिर tail? Then we can write that either it will be head or it will be tail। या तो head आएगा या फिर tail। ये कब आएगा, फर्स्ट टाइम। नाउ सेकेंड टाइम आपने फिर से टॉस किया, अब क्या आने वाला है, तो सेकेंड टाइम जब आप टॉस करेंगे, इट कैन बी इधर हेड और टेल। और अगर पहले टेल आया है तो अगेन इट कैन बी इधर हेड और टेल। So overall, there will be four different cases: head, 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 tail, head, and tail, tail. Right? So these are four different possibilities when we toss a coin two times, or we can say if we are tossing two coins, both are same। एक ही कॉइन को आप दो बार टॉस करें या फिर एक साथ में दो कॉइन को टॉस कर ले, मीनिंग इज सेम। तो यहाँ पे फोर डिफरेंट केसेस बनते हैं। नाउ what can be the question? Two coins are tossed. What is the probability of getting one head? तो वन हेड आने के चांसेस क्या है? So this is one head and this is also one head. So two outcomes out of four. So result is 1/2. If question is asking about what is the probability of getting two heads आने के chances क्या है? So only one outcome is favorable out of four. So 1/4. What is the probability of getting zero head? Zero head आने के chances. So एक event ऐसा है जहां पे क्या है? There is zero head because both are tails. So your result will be 1/4. Then probability of getting three heads. Three heads आने के chances क्या है? Three heads. Anybody? Probability of getting three heads. So we are tossing two coins, so it is not possible to get three heads. Therefore, probability will be zero. It will be zero. Okay.
Divya is asking, all mutually exclusive events are equally probable. No, not at all. Both are the different things. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग है जब दो इवेंट साथ में अकर नहीं हो सकते हैं, but it does not means that they are equally probable. Okay, so both the things are different. So sometimes values might be equal, but not always. So their meaning is totally different. So you don't have to mix both these things together. Now, similarly, if question is asking what is the probability of getting at least one head, at least one head. At least means what? कम से कम एक head आना चाहिए. That means one or more than one. So it can be like one head or it can be like two head. Three heads are not possible. So you have to include the cases of one head as well as two heads. So 3 divided by 4. 3 upon 4. Okay. All right. Now, if we talk about 3 coins, okay, let's take 3 coins now. So how many cases will be there? So we have tossed first time, second time, and now we are tossing one more time. So first time, head, second head, again, head and tail, head and tail, head and tail, and head and tail. So there will be 8 outcomes. Head, 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 tail, head, tail, head, head, tail, 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 head, head, tail, head, tail, tail, head, and tail, tail, and tail. So these are in total 8 number of outcomes. Now let's solve all these questions once again now for 3 coins. Okay. So again, the question is what is the probability of getting one head? So you have to find out one head wale cases kitne hain. So it is 1, 2, and 3. So 3 cases are there. So 3 upon 8. 3 upon 8. Then you have to find out 2 heads. So these are 2 heads, and 2 heads. So out of 8, 3 are favorable. Out of 8, 3 are favorable. Then probability of getting 0 head. That means all tails will be there. So there is the single outcome for 0 head. So 1 upon 8. 1 upon 8. Then next one is 3 heads. You have to get 3 heads. So there is one single outcome of 3 heads. So 1 upon 8. Okay. So in this way, you will get your answers. Then at least one head. कम से कम एक head आना चाहिए. So it can be one head, 2 head, and it can be 3 head also. You have to include all these cases. So 3 heads, 1 head, 2 head, and 3 head. You have to include all these cases. So 3 plus 3 plus 1. That is 7 upon 8. 7 upon 8. Okay. All right. So question number 1.
is simply based on this. Now we are talking about the dice. So let's say we are tossing two dice. So if we are tossing two dice, how many cases will be there? So the formula is 6 to the power of n. So in case of two dice, it will be 6 square, that is 36. So 36 are the total number of outcomes. And in case of two coins, you can note down the formula. It is 2 to the power of n. So in case of two coins, 2 square, three coins, 2 cube, 8, 4 coins, 16, and so on. So this is the general formula to find out the total number of outcomes. Okay. So two coins. So in case of coins, you can write the formula 2 to the power of n. And in case of dice, you can write down the formula 6 to the power of n. Okay. Okay. So Divya is having one doubt. She's saying triple H may be two heads. No? If I ask you the question, मैंने कितने heads लिखे हैं? What will be your answer? Two or three? Of course, it will be three. You cannot say like it includes two heads. No, because these are three heads, right? These are three heads. तो आपको जितना दिख रहा है उसका मतलब उतना ही है. उससे कम क्यों? So 3 means 3, 2 means 2, 1 means 1. So triple H does not mean it is two head. It is three head. So in case of two dice, there will be 36 outcomes. Now 36 outcomes कैसे होंगे? Like 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6. Similarly, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, and the last number will be 6 and 6. So in this way, there will be 36 cases. 36 cases. Okay. Now, if the question is asking if two dice are thrown, what is the probability of getting sum 5? अभी आपको क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है कि सम कितना आ जाए, 5 आ जाए. So there are two methods to solve this question. One is you have to make the cases first. Like sum 5 आना चाहिए. It can be 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1. Can we make 0, 5? No, because dice पे 0 नहीं होता है. There is no 0 on the dice. Okay, so it is 4, 1. All right. So there are 4 outcomes out of 36. So your result will be 1 upon 9. 1 upon 9. Now there is one shortcut which you can apply. So you can understand first the shortcut. Okay. Now let's bring all the possible cases. अगर आपने two dices को throw किया है, what is the minimum sum? Minimum sum कितना आएगा? The minimum sum will be 2, right? Minimum sum आपका कितना होगा? 2. And maximum sum कितना होगा? 12. Like 6 plus 6 is 12.
Now you can count the numbers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. So all these are the possible sum. ये सब क्या है आपका पॉसिबल सम कि दो डाइस आपके ने थ्रो किए तो उस पे मैक्सिमम सम कितना हो सकता है. इट कैन बी 2 to 12. All these are the possible cases. Now you have to simply write the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then reverse order 5, 4, 3, 2, and 1. So these are the cases. And here you can write upon 36 because these are the total number of outcomes. Okay. Now, if question is asking about probability of getting sum 5, तो सिंपली आपको क्या करना है, 5 के सामने देखना है 5 के सामने क्या लिखा है. तो 5 के सामने आपका नंबर है 4. So therefore your result will be 4 by 36. That's it. This is your answer. If question is asking about find the probability of getting sum 6, तो 6 के सामने क्या लिखा है 5. So your answer will be 5 by 36. Then probability of getting sum as even number का sum होना चाहिए. That means you have to take the cases of 2, 4, 6, 8, 10, 12. All these are even numbers. तो even numbers के cases को आपको count करना है. To include 1 plus 3 plus 5 plus 5 plus 3 plus 1. Okay, you have to include all these. So कितना आ जाएगा 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, and 9 plus 9 becomes 18. So 18 by 36, or you can see 1 upon 2. 1 upon 2. So this becomes your answer. So you can take the screenshot of this shortcut ताकि आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा. Okay. Now the next thing. A dice is rolled twice. What is the probability of getting difference of 2 points? 2 points का difference होना जरूरी है. So you have to find the different cases. अगर फर्स्ट डाइस पे आता है नंबर 4, तो सेकंड पे आएगा 6, एंड देन सेकंड पे आएगा 4, बिकॉज 2 का गैप होना जरूरी है. तो 6 and 4, 5 and 3, 4 and 2, 3 and 1. 2 and 0 is not possible, right? Then 3, 2 and 4, 3 and 5, 4 and 6. इन सब में गैप कितना है, 2 का गैप है. So all these are the possible number of cases. So these are 8 outcomes out of 36. So your required probability is 8 by 36. Okay. After cancellation, it is 2 by 9. Now, the next one, 2 dices are thrown simultaneously. Find the probability that sum of points on the 2 dice would be 7 or more. 7 or more का sum होना चाहिए. Now you can apply the shortcut here because sum आपको चाहिए 7 or more. So just count
So let's mark them all. 7 or more. So 7, 8, 9, 10, 11, 12. So count all these cases. 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. The total will be how much? 21. So your result is 21 by 36. So this shortcut is for the two dice and then addition of the two dice. This is applicable for addition in case of two dice. All right. Okay. So now let's talk about playing cards. So प्लेइंग कार्ड्स का आपको आइडिया होगा. अगर किसी ने अभी तक प्लेइंग कार्ड्स नहीं देखे हैं देन इट इज इम्पोर्टेंट यू कैन सी फर्स्ट. अगर आपको नॉलेज नहीं होगा प्लेइंग कार्ड्स का तो फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी होगी. तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्लेइंग कार्ड्स को कभी नहीं देखा, कभी यूज नहीं किया है, तो इट इज बेटर आप आज उस टास्क को कंप्लीट कर लें. ओके. सो प्लेइंग कार्ड्स में देर आर 4 different colors or you can say the categories which are known as. कौन कौन सी कैटेगरीज होती है? वन इज हार्ट, देन डायमंड, स्पेड एंड क्लब. सो हार्ट एंड डायमंड आर रेड इन कलर. दोनों का कलर रेड होता है. एंड स्पेड एंड क्लब आर ब्लैक इन कलर. इन दोनों का ब्लैक कलर. ओके. सो ऑल दीज 4 कैटेगरीज हैव 13 कार्ड्स. इन सब में कितने कितने कार्ड्स होते हैं? 13 कार्ड्स, which makes total 52. So in total there are 52 cards. Now in 13 cards का bifurcation क्या होता है? They starts from number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. After 10 it becomes Jack, Queen, King and Ace. So these are in total 13 cards. So all these 13 are in every category. So that means there are the number 2 occurs 4 times, number 3 occur 4 times, all these car occur 4 times. Jack is also 4, Queen is also 4, everything is 4. So if we talk about like we are drawing one card from the packet of the playing cards. If we are drawing randomly one card, what is the probability of getting a card of heart? What is the probability of getting a card of heart? So there are 13 cards of heart divided by total is 52, so it becomes 1 by 4. What is the probability of getting a card of black color? So black color cards are overall 26 out of 52, so it will become 1 by 2. Then what is the probability of getting one king? So there are 4 kings out of 52, so it becomes 1 by 13. Then probability of getting face card. फेस कार्ड मीन्स ऐसे कार्ड जिसपे कोई फेस बना होता है. तो फेस किस पे बना रहता है? फेस इज ऑन जैक, क्वीन एंड किंग. सो दीज थ्री आर हैविंग द फेसेस. तो ओवरऑल number of face cards will be 3 into 4, that is 12, divided by 52. All right.
Now let us understand some theorems or some rules of probability. So there are two main theorems for probability. One is addition rule and second one is multiplication rule. So let's write down addition rule. Addition rule in case of probability. Now the first thing is when events are when events are mutually exclusive. That means they cannot occur together. वो साथ में occur नहीं हो सकते हैं. So when events are mutually exclusive, then the formula will be probability of A union B. Union means addition. A union B is equal to probability of A plus probability of B. And there is nothing common between A and B. A and B के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों साथ में अगर नहीं हो सकते, तो दिस इज योर फॉर्मूला. So if there is A union B union C, then you have to add all these three, P of A plus B plus C. Add all these three. Okay. So when events are mutually exclusive, you simply add all the probabilities and you will get the result. Second is if you write the formula, when events are not mutually exclusive. When events are not mutually exclusive. So in that case, your formula will differ. So probability of A union B is equal to P of A plus P of B minus the common portion, that is A intersection B. A intersection B. So now let us understand with the help of some question. Now let's take some example. If you have to draw one card, a card is drawn at random. So what is the probability of getting a card of heart or card of heart or spade? So now heart और spade. So these are the two events. तो पहले आपको देखना ये दोनों इवेंट्स कैसे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. तो अगर आपने एक कार्ड ड्रॉ किया है, क्या उस एक सिंगल कार्ड में हार्ट एंड स्पेड दोनों आ सकते हैं क्या? कैन दीज टू थिंग्स, कैन दीज टू इवेंट्स अकर टुगेदर और नॉट? सो क्लियरली देयर इज अ बिग नो. दोनों इवेंट्स साथ में अकर नहीं हो सकते हैं. हार्ट एंड स्पेड साथ में आना पॉसिबल नहीं है. Okay, so what we can do, we can write down there are 13 hearts out of 52 and plus there are 13 spade out of 52. So required probability will be 26 by 52. If you cancel them, you are getting 1 upon 2. So this is your result. So events कैसे थे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों साथ में अगर नहीं हो सकते हैं. That means आपको कुछ भी आगे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है. Harsh Mahesh is asking mutually exclusive meaning. We have already discussed in the beginning of the session also. I think आपने late join किया है. You can also cover from the beginning. And also we have taken the example. Sakshi is asking not mutually exclusive means जो mutually exclusive नहीं है. That is not mutually exclusive. That means when events can occur together. So let's take one more example.
This time again, you have to draw a card. What is the probability of getting card of club or ace? Now, how many cards of club are there? Club के cards कितने होते हैं? There are 13 cards of club. How many cards for ace? 4 cards for ace. क्या दोनों में कुछ common है? Is there anything common between these two? Yes, there is a common thing. वो common क्या है? Ace of club. एस ऑफ क्लब। ये क्लब वाले 13 कार्ड्स में एक कार्ड कौन सा होता है? एस। और एस के 4 कार्ड्स में एक कार्ड कौन सा होता है? क्लब। दैट मीन्स देर इज अ डबल काउंटिंग ऑफ दिस कार्ड। ये एक कार्ड ऐसा है जिसको हमने दोनों में काउंट कर लिया। वी हैव काउंटेड इन एस एज वेल एज क्लब। तो जिसकी डबल काउंटिंग हो गई है उसको आपको वापस सब्ट्रैक्ट करना है। तो माइनस आपने किया 1/52, तो यू आर गेटिंग 16/52। Okay, so there are only 4 categories. Joker is always not the part of the deck. Okay, तो जब इवेंट साथ में आकर हो सकते हैं तो वो बन जाएगा आपका नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इवेंट साथ में आकर नहीं हो सकते हैं तो वो बन जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Okay, so let's take one more example, or you can write the formula A union B union C. So in case of 3 events and events are not mutually exclusive, so you can write down the formula probability of A plus B plus C माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो ए एंड बी में कॉमन है, डबल काउंट हो चुका है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। बी एंड सी का जो कॉमन है दैट आल्सो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। देन ए एंड सी का कॉमन भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एंड जो तीनों में कॉमन है ए बी एंड सी, दैट यू हैव टू ऐड। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर 3 outcomes or 3 events. Okay, so let's take few more example. Let's say there are tickets numbered from 1 to 100. So 100 tickets are there. Each ticket is bearing a number. हर ticket पे एक number लिखा है. So overall 100 numbers are there. Now randomly one ticket is drawn. एक ticket आपने draw किया है. What is the probability of getting number 2 or its multiple? या तो उस टिकट पे नंबर 2 हो या फिर 2 का मल्टीपल हो, क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी? So favorable upon total outcomes, to divide it by 100 because there are in total 100 outcomes. Now out of these 100, how many are favorable? कितने favorable हैं? So we know that 2, 4, 6, 8, all these are the multiple of 2. So how many multiple of 2 will be there? So 100 divided by 2, that is 50. So your probability will be half, 1/2. Similarly, if we are talking about 3 or its multiple divided by 100. अब 3 के multiples कौन से होंगे? 3, 6, 9 and so on. So let's check the number of multiples. 100 divided by 3, that is 33.33. But multiples can never be in decimal. वो decimal में नहीं हो सकते हैं. तो after decimal जो भी number लिखा है, ignore this. Take the whole number. That is 33. So 33 by 100 becomes the probability. Then multiple of 2 और 3, या तो 2 का मल्टीपल हो या फिर 3 का मल्टीपल हो. So here you have to check events are mutually exclusive or not mutually exclusive. तो पहले आप क्या करेंगे? 50 multiples
of 2, 33 multiples of 3. Now, is anything common between them? Like if we talk about 6, तो 6 number हमने double count किया है. That is in 2 as well as 3. Then number 12, number 18, all these are double counted. इन सबकी counting double हो चुकी है. तो फिर आप क्या करेंगे? जितनी भी double counting है उसको वापस subtract करना है. तो अब ऐसे कितने numbers हैं जो कि double count हो रहे हैं? तो उसका वे क्या है? The way is take the LCM of 2 and 3. LCM is 6, so 100 divided by 6. So it is 16.67. Ignore after decimal. So 16 numbers are common. जिसको हमने दोनों में include कर लिया है. So you have to subtract this and get the final result. So now you can get the final answer. That is 67 upon 100. Okay. All right. So this was basically addition rule. So addition rule कब कब apply करना है उसके कुछ shortcuts अगर हम ध्यान रखें तो it becomes easy for us. When probability of A union B is written, addition rule कहाँ लगेगा? When A union B is written, or it can be A plus B, then it can be A or B, it can be any of them, either A or B, it can be at least one. So in all these cases we have to apply addition rule. इन सारे cases में आपको क्या apply करना है? Addition rule. तो ये एक थोड़ा शॉर्टकट तरीका है जिससे हमें पता लग जाएगा कहाँ पे एडिशन रूल लगेगा और कहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल. ओके. Then let's consider this example. Example number 4. What is the chance of picking a spade or an ace not of spade from a pack of 52 cards? So what is the requirement? Chance of picking a spade. Now, how many spades are there? So spade are how many? 13. So 13 spade and ace not of spade. Ace not of spade. That means you have to remove one common card. So it is 13 by 52 for the spade, then 4 by 52 for the ace, and remove one common card. You are getting 16 by 52. If you cancel, it becomes 4 by 13. 4 by 13. Harsh is asking, can you explain at least one example? Yes, we will be taking at least one example, but not at present. After few examples, after few questions, we will be taking at least one examples also. Okay. Then, okay, let's try this one. Sixth one, 15.6. A committee of 7 members is to be formed from a group comprising 8 gentlemen and 5 ladies. So there are 8
men and 5 ladies. So 13, and out of these 13 persons, you have to form a committee of 7 members. तो 7 members का आपको committee बनाना है. So what is the probability that the committee would comprise? कि committee में क्या होना चाहिए? 2 ladies. Committee should comprise 2 ladies. And second is at least 2 ladies. So first, let's solve for the 2 ladies. So always पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. So for total number of outcomes, you have to select 7 members out of 13. तो 13C7 कॉम्बिनेशन यहाँ पे अप्लाई होगा बिकॉज 13 में से कौन से 7 यहाँ पे सेलेक्ट होंगे वी डोंट नो. तो 13C7. तो 13C7 को यू कैन सॉल्व. So it will become how much? 13 into 12, 11, 10, 9, 8, and then 7. Divided by 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So 7 is getting cancelled. 4 and 2 is 8. Then further you can cancel 6 and 12, 5 and 10, 3 and 9. So after solving, you are getting how much? 13 into 11 into 2 into 2 into 3 is 12. These are the number of ways, total number of ways. Now, our requirement is 2 ladies. So ladies are 5. So out of 5, you have to select 2 ladies. So 5, 3, 2. That means 5 men you have to select. And how many men are there? 8. So 8C5. 8C5. Now you have to select both of them, males as well as females. Therefore, you have to multiply them. तो ये हो गया आपका फीमेल का सिलेक्शन. दिस इज योर मेल सिलेक्शन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. Total number of outcomes. So this is the value of probability. In this way, you can calculate all your probability. Okay. Yeah. Yes. Now the second part. Second part is at least 2 ladies. This time you require at least 2 ladies. That means ladies can be 2 or even more than 2. So different combinations can be there. So 2 ladies, 5 gents, 3 ladies, 4 gents, 4 ladies, 3 gents, 5 ladies, 2 gents. Now more than 5 ladies are not possible because in total we are having 5 ladies in the group. So these are the 4 possible outcomes. So either first case will happen or second case or third case or fourth case. इन चारों में से कोई एक सिंगल केस होगा. सारे केसेस एक साथ में नहीं होंगे. एनी वन इवेंट विल अकर. तो जब कोई एक इवेंट अकर होने वाला है then always you have to use addition rule. ओके. तो फर्स्ट केस को आप सॉल्व करेंगे. 5C2 मल्टीप्लाई बाय 8C5 प्लस 5C3 multiplied by 8C4 plus 5C4 into 8C3 plus 5C5 into 8C2. So add all these and you will get the number of cases. So 1, 5, 6, 8 cases are there. Okay. तो ए पार्ट में क्या था? ओनली 2 लेडीज. तो एक सिंगल केस आपने सेलेक्ट किया. दैट मींस ए पार्ट इंक्लूड्स बेसिकली दिस केस ओनली. लेकिन बी पार्ट में इसके अलावा बाकी सारे केसेस भी इन्वॉल्व होते हैं. ओके. ओके. सो नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन रूल. सो
before going for the multiplication rule, let's keep a break of 10 minutes and then we will continue.
So welcome back everybody. So now let's switch to multiplication rule, multiplication theorem, multiplication rule. Now multiplication rule में आपको क्या करना है? Let us understand. When events are independent, the first case is when events are independent. That means they are not depending on one another. So in that case, probability of A intersection B is equal to PA into PB. PA multiplied by PB. In case of three events, if three events are there, then P of A multiplied by P of B and P of C. You have to multiply all these three. तो जितने भी इवेंट्स होंगे उन सबको क्लियरली क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है व्हेन इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? एक इवेंट का, फर्स्ट इवेंट का सेकंड इवेंट पे कोई अफेक्ट नहीं होता है. दैट मींस इवेंट्स आर independent. So for example, again, let's take the example of coins. Two coins are tossed. What is the probability of getting head on first and tail on second? Head on first and tail on second. तो क्या करना है? फर्स्ट पे हेड होने के चांसेस, फर्स्ट पे हेड आने के चांसेस क्या है? 1/2, बिकॉज हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2. टेल आने के चांसेस कितने हैं? ये भी 1/2. एंड बिकॉज हमें दोनों इवेंट्स अकर होने चाहिए. मल्टीप्लीकेशन रूल में कब अप्लाई करना है? अब इफ देयर आर टू इवेंट्स एंड बोथ इवेंट्स मस्ट अकर, दोनों इवेंट्स अकर होने चाहिए. अगर तीन इवेंट्स है तो तीनों इवेंट्स अकर होने चाहिए. देन इन दैट केस यू हैव टू मल्टीप्लाई. सो योर रिजल्ट विल बी 1/4. Similarly, if you are talking about like dice is thrown, first time you must get number 2 on the dice, and second time you must get number 5 on the dice. So number 2 आने के लिए चांसेस 1/6, नंबर 5 आने के चांसेस भी कितने हैं? 1/6. दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, इट विल बिकम 1/36. 1/36 is the overall probability of getting the result. ओके. सो ये इवेंट्स कैसे हैं? एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं. अगर फर्स्ट टाइम कुछ भी आए, सेकेंड टाइम टेल आने के चांसेस 1/2 ही रहेंगे. सिमिलरली डाइस पे फर्स्ट टाइम कोई भी नंबर आए और सेकेंड टाइम आपको 5 चाहिए तो उसके चांसेस 1/6 ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होने वाले हैं. तो इन दोज केसेस वी आर राइटिंग दैट इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट. देन सेकेंड, व्हेन events are dependent. अगर इवेंट्स डिपेंडेंट है तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए मल्टीप्लाई बाय पी बी बाय. सो बी बाय ए का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी व्हेन इवेंट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड. इवेंट ए हो चुका है, उसके बाद में इवेंट बी के अकर होने के चांसेस. ओके. एक इवेंट हो चुका है, उसके बाद में सेकंड इवेंट होने के चांसेस. तो अगर इवेंट बी बाद में होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी अफेक्ट हो जाती है. कैसे अफेक्ट हो जाती है? लेट अस अंडरस्टैंड विद द फॉर्मूला or with some question. Now, again, we are taking the question of cards. Now, what is the probability of getting card of heart? And second time आना चाहिए आपके पास card of spade. First time heart and second time में spade. Now, total number of cards are 52. Okay. And hearts आपके पास कितने हैं? 13 hearts है out of 52.
नाउ सिंस एक कार्ड आपका निकल चुका है, तो दिस टाइम रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड्स आर 51 ओनली, एंड नंबर ऑफ स्पेड्स कितने होते हैं? 13. सो योर रिजल्ट विल बी 13 बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 13 बाय 51. तो यहाँ पे समझने का पॉइंट क्या था कि वैसे तो स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 13/52. 13/52, बट क्योंकि फर्स्ट इवेंट हो चुका है, तो वो सेकेंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट करेगा. तो देयरफॉर यहाँ पे जो हमने प्रोबेबिलिटी लिखी है स्पेड की, इट इज 13/51, बिकॉज ओनली 51 कार्ड्स आर अवेलेबल नाउ. ओके. Similarly, if there are three cases, let's say we are drawing first card should be ace, second card should be ace, and third card also should be ace. तो फर्स्ट टाइम आपने एस निकाला है, एस के आने के चांसेस क्या होंगे? 4/52. नाउ रिमेनिंग कार्ड्स आर 51 in total, and remaining aces will be 3. Similarly, remaining cards will be 50 and remaining aces will be 2. नाउ तीनों के तीनों कार्ड्स हमें निकालने हैं, सारे इवेंट्स अगर होने चाहिए, देयरफॉर वी हैव टू अप्लाई द मल्टीप्लिकेशन रूल. ओके, तो मल्टीप्लाई ऑल दीज थ्री एंड यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट. सो दिस इज मल्टीप्लिकेशन रूल. तो मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगाना है? जब जितने भी इवेंट्स गिवन है वो सारे इवेंट्स अगर होने चाहिए, तो उस केस में आप लगाएंगे मल्टीप्लिकेशन रूल. ओके. Now, 15.7 example. This is a different and simple kind of example. The following data relate to the distribution of wages of group of workers. Okay. If a worker is selected at random from the entire group of worker, what is the probability that wages would be less than 50? Now, data आपके पास available है, और डेटा में आपको क्या गिवन है? वेजेस इज गिवन. वेजेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है? फ्रॉम 50, 50 to 60, 60 to 70, and so on. Last limit is 110 to 120. Okay. So this is your last limit. The number of workers are also given. Just find the total number of workers. तो पहले आप टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स को कैलकुलेट कर लें कि कितने वर्कर्स है हमारे पास इन टोटल. सो यू कैन काउंट डाउन. टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स आर 150. 150. ओके. नाउ वेजेस लेस देन 50. तो लेस देन 50 तो हमारे पास कोई ऐसा पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो 0/150 गिव्स 0. देन वेजेस लेस देन 80. 80 से कम. तो 80 से कम में कौन कौन से केसेस है? 15, 23 एंड 36. सो 15 प्लस 23 प्लस 36. So how many are there? 74 out of 150. Okay. Then wages would be more than 100. 100 से ज्यादा चाहिए. More than 100 में it is 12 and 5. So the result will be 70 upon 150. 17 upon 150. Okay. Any doubt till here? No. Then wages between 70 and 100. 70 and 100 के बीच में क्या आंसर होगा? तो 70 and 100 में, so it will include 36 plus 42 plus 70. So total will be 95 out of 150. 95 upon 150.
So this is your answer. Okay. So now, yes, there is one more term now, that is complementary event. Complementary events. Now, what is the meaning of the term complementary events? किसी event के अगर नहीं होने के chances, the probability of not happening of an event is known as the complementary event. Let's say the probability of A is 1 by 3. Then probability of A dash. That means A के नहीं होने के chances. It will be 1 minus probability of A. 1 minus probability of A. So it will become 2 by 3. 2 by 3. So complementary is denoted by A dash, or you can write A bar, or you can write C on the top of A, or it can be not A. Okay. So this is the notation. So अगर A का probability 1 by 3 है, तो A dash will become 2 by 3. All right. Now, let's talk about eighth example. Three events A, B, and C are mutually exclusive, exhaustive, and equally likely. So what is the probability of the complementary event of A? तो complementary event होने के chances क्या है? So now, all these three are mutually exclusive, exhaustive, and equally likely. So mutually exclusive means one at a time. Either A will happen, or B, or C. This is mutually exclusive. Exhaustive means these are the only possible event. इनके अलावा और कोई possibility नहीं है. Exhaustive का मतलब है सिर्फ इतने ही events होंगे. तो जब इतने ही events होंगे, तो इन सब की probability का total कितना होगा? 1. So P of A plus B plus C is equal to 1. So total of all these three will be equal to 1. This is exhaustive. Equally likely का मतलब है P of A will be equal to P of B plus P of C. All these, sorry, is equal to P of C. All these three will be equal. ये तीनों क्या हो जाएंगे? Equal. This is equally likely. Now let's take the value as x. If the probability of all these three is x, so x plus x is equal to 1. So 3x is 1. So value of x will be 1 by 3. Therefore, probability of A is 1 by 3, for B is 1 by 3, and for C is 1 by 3. So we have got the result about the probability. Now the question is talking about find the probability of complementary of A. A का complementary आपको चाहिए. So A dash will be 1 minus 1 by 3, that is 2 upon 3. Okay. All right. So who are giving the answers? Afrin, Divya, Monish, great, and Anuj. Now let us move forward. So addition rules we have discussed. This we have discussed. Now let's take this 11th example. Similar kind of example we have done.
A number is selected at random from first 1000 natural numbers. So there are first 1000 natural numbers. What is the probability that it would be a multiple of 5 or 9? वो या तो 5 का मल्टीपल हो या फिर 9 का. तो इस 5 और 9. That means only one thing must occur, either multiple of 5 or it should be multiple of 9. So first of all, we will be finding probability of multiple of 5 plus multiple of 9 and then minus the common portion. Common portion. So 5 के कितने multiples हैं? Up to 1000. So for number of multiples of 5, you can calculate 1000 divided by 5, that is 200. Then 9 के multiples कितने होंगे? 1000 upon 9, that is 111. And then the common portion. Common के लिए आप क्या करेंगे? Take the LCM of 5 and 9. It is 45. So 1000 divided by 45. How much you are getting? 22. 22 is common. Whole divided by 1000. Whole divided by 1000. Okay. Now you can simplify this and get your answer. So I think you are getting 0.289. This is your answer. Okay. Understood? Then Nandar is asking why we have multiplied the 2 in 15.6. See, 15.6 में आपके पास दो different cases थे और दोनों events अगर होने चाहिए. तो जब भी दोनों event अगर होंगे, you have to multiply. Okay. तो उस केस में आपको क्या करना है? Multiply करना है. Then 50.1. The probability that an accountant's job applicant has a BCom degree is 0.85. So probability of getting BCom degree is 0.85, CA degree is 0.30, and both BCom and CA is 0.25. These three things are given out of 500 applicants. So how many would be BCom or CA? This you have to answer. How many would be BCom or a CA? So now, first of all, let's write the probability of getting BCom degree is 0.85. Probability of getting CA degree is 0.30, and for both BCom as well as CA. That is a common between them. Common for common you have to always write intersection. Sets के अंदर भी आपने पढ़ा होगा. जब भी हम common की बात करते हैं, you have to use sign of intersection. So all these three are given. So now you require probability of B union C. So P of B plus P of C minus B intersection C. Okay. So let's simplify. You are getting 0.90. So how many would be become or CA? So now we require the number of persons. So when you require number of persons, simply multiply, simply multiply n with probability. Number of persons with probability. So total number of persons are 500. Probability is 0.90. So you are getting 450. So 450 will either be or C. All right.
ओके. अंडरस्टूड. Now let's write some more formulas. Now this time, let's say this is A and this one is B. This is A and this is B. Now the question is asking us to find out probability of A minus B. Probability of A minus B. तो A minus B का मतलब क्या है? A के अंदर अगर B का कोई पोर्शन इंक्लूडेड है तो you have to remove that. So this is A and इस A में ये एक कॉमन पोर्शन है जो B का भी है, तो this you have to remove. You have to remove this common portion and then you will get only A. So what is the requirement? P A minus P, or you can say P only A. We require the probability of only A. That means nothing should be common between A and B. So what is the formula? Probability of A minus this common portion, that is A intersection B. तो A में से अगर आप A intersection B को लेस कर देते हो, then what you are getting? A minus B. Okay. All right. Similarly, if the question is talking about B minus A, then you have to subtract probability of B minus probability of A intersection B. B में से आपको कॉमन पोर्शन रिमूव करना है. B में से कॉमन पोर्शन रिमूव करना है. All right. So Divya is saying sets का भी revision हो रहा है with this. Yes, these topics are common between probability and sets. Give 1 second, guys. There is some background noise in between. सर आपका ये वॉइस नोट ऑन है तो बैकग्राउंड में आपका नॉइज आ रहा है. आई थिंक उनको सुनाई नहीं दे रहा. दे आर नॉट लिसनिंग. Let's message one again. So let's continue. So this we have done. Now let's write 15.13. Let's try this 15.13. If probability of A minus B is equal to 1 by 5, probability of A is 1 by 3, probability of B is 1 by 2, then what is the probability that out of the two events, A and B, only B would occur? Only B occur होना चाहिए. Now the requirement is probability of only B. Only B should occur. That means B में से आपको क्या करना है? Common portion remove करना है. So probability of
minus probability of A intersection B. Now, for this, you must have probability of B. So PB is given, but A intersection B is not given. A intersection B आपके पास available नहीं है. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? You can use the formula of PA minus B because the value is given. So let's use this value first. So PA minus B is equal to P of A minus P of A intersection B. तो A में से आपको ये पोर्शन क्या करना है? रिमूव कर देना है. So what is PA? It is 1 by 3. A intersection B is unknown and A minus B is 5. Okay. So therefore, P A intersection B is equal to 1 by 3 minus 1 by 5. You can take the LCM, that is 15. So 5 minus 3, 2 by 15. 2 by 15 is basically A intersection B. This is your A intersection B. Now, what is the requirement? P only B. तो values को put करते हैं 1 upon 2 minus 2 by 15. So it is 30. 30 is the LCM. So 15 minus 4. 11 upon 30 is the required result. तो 11 by 30 आपका रिजल्ट आ चुका है. Understood everybody? Yes, so Anushka, Anush, Nancy, Tamish, one has given the answer. Now, example number 15.14. There are three persons A, B, and C having different ages. सबकी age अलग-अलग है. The probability that A survives for another 5 years is 0.80. A के सर्वाइवल के चांसेस कितने हैं? 0.8. B के सर्वाइवल के चांसेस है 0.6. C के सर्वाइवल के चांसेस है 0.5. तीनों के सर्वाइवल के चांसेस गिवन है. Then A and B survives together. A and B का jointly 0.46. Then B and C jointly survives is 0.32. And A and C survives jointly it is 0.48. तो इन सबके joint survival के chances given है. The probability that all these three persons survive another 5 years. तो तीनों में common for all three is 0.26. Now, what is the requirement? What is the probability that at least one of them survive? At least means addition rule. So the formula for addition rule we have already written. PA plus B plus B. फिर जो 1 by 1 कॉमन है that you have to subtract. तो A intersection B, B intersection C and A intersection C ये कॉमन पोर्शन रिड्यूस करना है and then जो तीनों में कॉमन पोर्शन है this you have to add. Okay, so if you see the example it is A, B and this is C. A, B and then C. So this will be common between A and B. This we have subtracted. Then common between B and C is also subtracted. Then common between A and C is also subtracted. तो ऐसा करने से जो तीनों में कॉमन है दैट इज टोटली रिमूव. वो टोटली रिमूव हो चुका है इसलिए लास्ट में आपको वन टाइम वापस से ऐड करना है. तो अप्लाई दिस फॉर्मूला. अप्लाई ऑल द वैल्यूज. तो फर्स्ट इज 0.8 plus 0.6 plus
सर आपका बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है काफी देर से, मैं वही। जी। Okay, so now put all the values. So what was the value? 0.8 plus 0.6 plus 0.5 minus 0.46 minus 0.32 minus 0.48, and at last add 0.26. So after doing all plus minus, you are getting 0.90. Now our requirement is to find the number of persons. So if you require number of persons, then just multiply with the given number, that is 500. So if 500 is the total number of persons, then your requirement will be 450. If just probability is asked, then your answer is zero point 0.9. If frequency is required, that is number of persons are required, then the result will be 450. Okay. Okay, so now the next thing is conditional probability or compound probability. Now, conditional means we are writing probability of A by B. So A by B means probability of A when event B has already occurred. So now the formula can be written in this way: probability of A intersection B divided by the probability of denominator, that is PB. So A upon B है, तो A and B का intersection divided by P of B. So using this method, you can create a number of formulas. Let's say if there is A upon B dash, then the formula will be A intersection B dash upon P B dash. If question is asking about A dash upon B, then you will write A dash intersection B upon PB. Then A dash upon B dash, your formula will be A dash intersection B dash upon P B dash. Similarly, if reverse is required, P B upon A, B upon A, it means P A intersection B upon P of A. Then B upon A dash. So it is B, or you can write A intersection B, A dash intersection B upon A dash. So any number of formula you can create using this method. Okay. Now the formula for these we have already written. The first thing will be probability of A intersection B dash. This simply means you require only A. You require only A. B is not required. Or you can say it is A minus B. Remove B from A. So what is your formula? PA minus PA intersection B. Similarly, if the question is talking about A dash intersection B, it means you have to write PB minus A intersection B. So it simply means P only B, or you can say PB minus A. This is your requirement.
Then the third one says A dash intersection B dash. So again, the same formula which we have covered in sets. 1 minus probability of A dash will become A, intersection will become union, and B dash will become B. So 1 minus probability of A union B. All right. So in this way, you can solve all your variety of questions. Now let's try the 15th example. Rupesh is known to hit a target in 5 out of 9 shots. So probability of hitting the target by Rupesh. He is trying 9 times and 5 times is accurate. The 5/9. Then probability of David. It is 6/11 because he hit 6 times out of 11 shots. Then what is the probability that target would be hit once they try? Now, both are trying and our aim is that target should be hit. चाहे वो रुपेश हिट करता है या फिर डेविड, तो any of them can hit. तो either रुपेश can hit और डेविड can hit. दोनों में से कोई भी हिट कर सकता है. So different cases are possible. Either Rupesh will hit or David will hit or both of them will hit. The common we can subtract. जो भी दोनों में कॉमन होगा वो आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. सो रुपेश के हिट करने के चांसेस कितने हैं? 5/9. डेविड के हिट करने के चांसेस 6/11 एंड माइनस दोनों हिट करें तो 5/9 फॉर रुपेश एंड 6/11 फॉर डेविड. दोनों को आपने मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज बोथ आर हिटिंग द टारगेट. दोनों इवेंट्स अकर हो रहे हैं, तो जब भी दोनों इवेंट अकर होंगे यू हैव टू मल्टीप्लाई. Now simplify this and get the result. So 1 minus now you can write take the LCM and simplify. So 5/9 plus 6/11 minus to the cancellation 10/33. So 79/99. 79/99. So there is one more way to solve this question. It is 1 minus. Both of them does not hit the target. दोनों ही टारगेट को हिट नहीं कर सके तो उसको आप माइनस कर दें. सो 1 माइनस रुपेश ने भी हिट नहीं किया एंड डेविड ने भी हिट नहीं किया. सो 1 माइनस 4/9 एंड 5/11. You are getting 79/99 again. So 4/9 कैसा आएगा? रुपेश के हिट नहीं करने के चांसेस. इट इज 1 माइनस 5/9 एंड डेविड के हिट नहीं करने के चांसेस 1 minus 6/11 that is 5/11. ओके. सो दोनों मेथड से आपका रिजल्ट सेम आएगा 79/99. Okay, let's try one more question. A pair of dice is thrown together and sum of points of the two dice is noted to be 10. Sum is 10. What is the probability that one of the two dice has shown the point 4? किसी डाइस पे नंबर 4 आया हो इसके चांसेस क्या होंगे? तो सिंपलेस्ट वे टू सॉल्व इज राइट द केसेस. सम 4 आने के केसेस क्या हो सकते हैं? इट कैन बी 4 6 5 5 एंड 6 4.
Three cases are there in total. So these are total number of outcomes. Now, out of these three, what are favorable? Favorable कौन से होंगे जिसमें कहीं ना कहीं नंबर 4 आ रहा होगा? So two cases में नंबर 4 आ रहा है. So your result will be 2 by 3. 2 by 3. Then let's try one more. 15.17. In a group of 20 males and 50 females. So males are 20, females 15. 15 females, 12 males and 8 females are service holder. So out of these 20, 12 males are service holder and remaining 8 are non-service holders. Similarly, out of these 15, 8 females are service holder and remaining are non-service holders. This is given in the question. So what is the probability that a person selected at random? Now, one person is selected at random from the group and he is the service holder given that the selected person is male. तो आपको मेल में से सेलेक्ट किया है and वो सर्विस होल्डर है. What will be the probability? तो मेल के लिए 20/35 एंड सर्विस होल्डर के लिए जो आपको मेल रिक्वायर्ड है इट इज 2/35. सो योर रिजल्ट विल बी 0.6. 0.6. तो दोनों कंडीशन आपको मीट आउट करनी है. इट शुड बी सर्विस होल्डर एज वेल एज द पर्सन शुड बी मेल. तो दोनों कंडीशन को फुलफिल करने पे योर रिजल्ट इज 0.6. Right. Then let's complete the last question for the day. 15.18. In connection with the random experiment, some values are given. PA, PB, and A union B. These three values are given. Now you are supposed to calculate PA by B. Now for A by B, we have written the formula A intersection B upon PB. Now, A intersection B is available or not? No, it is not available. So you have to find out first A intersection B with the given information. So we know that probability of A union B is equal to PA plus PB minus A intersection B. ये formula हमारे पास available है and out of these four values, three are given in the question. तो ऑटोमेटिकली फोर्थ वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो 5/6 इक्वल टू 2/3 प्लस 3/5 माइनस A intersection B. So now let's calculate the final result. So how much you are getting? Take the LCM. You will get 13/30. So 13/30 is basically A intersection B. Now you have to write P of B. P of B is 3/5. 3/5. So now you can cancel and get the final result. So it is 13/18. 13/18 is your final answer. Second is you require B upon A. So B upon A के लिए आपको A by B का reciprocal नहीं करना है. It will be incorrect. Formula will be A intersection B upon P of A. So 13/30 divided by 2/3. So your result will be 13/20.
Then third one, A dash upon B. So P, A dash intersection B upon PB. So A dash intersection B कैसा आएगा? P of B minus the intersection. So 3 by 5 minus 13 by 30 upon 3 by 5. Let's simplify this and get the answer. So you are getting how much? 5 upon 18. So in this way, you can complete all your parts. So this is basically conditional probability. So majority of the concept of the probability chapter we have already covered. And now overall we have to practice more and more questions. Okay? तो जितना आज हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा. तो आज के लिए प्रैक्टिस के लिए आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं वो आप नोट डाउन कर लें. Note for 21 example 21 ये आपको करना है. Then you can try which one. 26, 21, 26. This you can try. Then expected value is a different concept. And after that, you can try this set A. So most of the questions for set A you can try because most of the questions are theoretical. And after that, set B we will be doing in the next session. So जो example मैंने आपको note कराए हैं वो आपको complete करना है as well as set A this you have to try so that आपको एक बेसिक्स आइडिया मिल जाएगा कि प्रोबेबिलिटी में जो भी हमने कवर किया है तो उसमें से काफी सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट क्लास इज डे आफ्टर टुमारो. टिल देन कंप्लीट ऑल योर होमवर्क. ओके, सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू सून. यस, एंटर.